हाँ रन करिए. Now type another one. Data importing. Data equal to pd dot read underscore csv in the brackets single quotes write down a2 dot csv. ठीक है. In the next line just write data dot head. हाँ HEAD हाँ in the brackets 14. So it will provide you the first 14 result. If you are putting tail 14, so it will provide you last 14 result. ठीक है. Now here is the data. क्या error है? सेम डायरेक्टरी में है. ये आपका है नोटबुक्स होम पेज. यहाँ पे कहाँ पे डाउनलोड किया है? यहाँ पे डाउनलोड्स पे किया है a2.csv. हाँ ठीक है. और आपकी फाइल कहाँ बनी हुई है? यहीं पे फाइल बनाई है. कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी. ठीक है. हाँ सेम फोल्डर. क्या हुआ? हाँ डेटा कहाँ पे डाउनलोड है? डेस्कटॉप पे. अच्छा मिल जाएगा. ये है ना डेस्कटॉप. ये आपका है ना. कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी. a2.csv फाइल की एक्सटेंशन देना होगा बात. हाँ मैंने सेम में ही किया है. पर ये देखिए ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. कंट्रोल सी. हाँ आपका भी नहीं हुआ? इनका नहीं हुआ? ये पार्ट दिया था मतलब इसमें ये ना कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल ए. सॉरी चलो ठीक है. कंट्रोल सी बाकी के डिलीट कर दो. कंट्रोल बी डिलीट. Now my data is imported. So we have to make sure that your created Jupyter file as well as your Excel file should be in the same directory. Else you have to give the all path. Now you can see the first 14 parameters. First 14 points. Day 1, 2, 3, 4, 5. Outlook is rainy, overcast, sunny. Humidity, windy, and play golf. Yes or no, yes or no. Binary classification problem. But what is the problem over there? Main problem is my machine learning understand only the numerical data, not the text data. So we have to convert this text data into the numeric format.
by using some pre-processing. Okay, so import pre-processing. Write down from sklearn import pre-processing. From pre-processing, we need to inherit some functions that is called label encoder. Label encoder basically convert your text data into the numeric format automatically, and this pre-processing will be stored by le variable. So le equal to pre-processing dot label encoder. Now under my data, I am creating first variable, that is outlook underscore lb. That is my created variable, outlook underscore lb. Now le dot fit underscore transform. Fit and transform means first we have to transform text into the binary and then fit inside my data set. Le dot fit transform, under the parameters I have to pass those variables that I want to fit and transport. What is the first variable? That is outlook itself in the capitals. So data, and under the brackets I have to provide outlook with capitals. Now see the result. Now see the result of fit and transform. Your outlook, which is measured by overcast, sunny and rainy, it is converted into 1, 0, 2. 0, 1 and 2. So what is the 0 means? 0 means rainy, overcast means 1 means rainy, overcast is 2, overcast is 0 I think, 0, and sunny is 2. हुआ? एरर आ रही है, इधर हो गया सबका? गुड. हाँ जी, कोड देखना है आपको. Processing dot label encoder. लेबल इनकोडर में प्रॉब्लम आया है. हाँ. ये आपने कॉमा लगाया है, यहाँ डॉट होगा. ठीक है. Now do the same for rest of the variables. Do the same for rest of the variables. What are the rest of the variables? Humidity, windy and play golf. चलिए करिए.
हो गया बेटा। मैडम आपका हुआ इधर? मैडम आपका हो गया? सारे वेरिएबल्स हो गए? एक इसमें नहीं है पूरे डेटा, हाँ जी, एक इसमें सभी को लाना है क्या? हाँ देखिए किया है। ओके, हाँ अलग अलग नाम दे दिया। हाँ, सबको अलग अलग नेम दे दिए। हाँ जी, हाँ 8। अभी जो न्यू आए हैं वो भी हाँ, सब मिला के टोटल 8 है, नए पुराने। क्योंकि अभी काफी रिक्रूटमेंट अच्छा खासा हुआ ना पीएचडी। पार्ट टाइम काफी लोगों ने हाँ ज्वाइन किया, फुल टाइम तो कम है। पार्ट टाइम है। फुल टाइम में कैसा रहता है? फुल टाइम के लिए आपको जॉब नहीं करनी होती है। मतलब आपको डेली जाना रहता है? डेली आपको 9 to 5 या उससे भी ज़्यादा आपको रिसर्च के लिए बैठना है। टीए वर्क होता है, जो भी आपको गाइड अलॉटेड है उसको हेल्प करना, उसको असिस्ट करना। स्टाइपेंड मिलता है, अभी तो स्टाइपेंड भी बढ़ गया है। ऐसे ही रहता है। अभी तो इसके पहले तो मैंने जो सुना था कि वो पीएचडी एंट्रेंस होता है, प्रॉपर गेट एग्जाम और ये सब के थ्रू स्कोर के बेस पे, बट अभी शायद उन्होंने डायरेक्ट ही इंटरव्यू पे कॉल विदाउट गेट वो भी एक प्रोसेस है कि इट वाज फॉर ओनली फॉर दिस सेशन? नहीं। ओके, दैट प्रोसेस इज हाँ कंटिन्यूस, यस। बट नॉन गेट वालों को जैसे स्कॉलरशिप इज नॉट प्रोवाइडेड। स्कॉलरशिप। ओके, द फी कंसेशन। टीए असिस्टेंट जो जॉब है, जो असिस्ट करते हैं, तो उनको ड्यूटीज नहीं दी जाएंगी। एंड ऑल्सो अगर ड्यूटीज नहीं दी जाएंगी तो उनको स्टाइपेंड भी अलॉट नहीं होता। अच्छा, ओनली फॉर गेट क्वालिफायर? हाँ, स्टाइपेंड इज गिवन ओनली फॉर द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। Whether he's going direct or indirect interview, the direct Yes. interview or the process, the whole process. Can I proceed? Okay. So in the last example in the SVM, we have imported SVM from sklearn. Here I will import name-bias from sklearn. So my line will be, आपको देखा हुआ लग रहा है मुझे, import from sklearn dot name-bias import Gaussian MB. अच्छा ठीक है। From sklearn dot कहाँ गया, हाँ name-bias import Gaussian Gaussien NB. Now I'm creating another variable model that is nothing but type of all Gaussian MB methods.
Hmm? So I'm importing the model. After importing the model, what is the next process? X and Y, right? What will be my X? X will be my and windy outlook and humidity, and my Y will be play goal. ठीक है? So जो आपने लेबल ट्रांसफॉर्म करने के बाद किया है ना, वो मेरे X और Y में जाएंगे, not the previous first cases. हाँ हाँ हाँ, चलिए X and Y. So I'm just copy pasting over there. So you can see from this X is my data, and I am using two brackets over there. Here I am using only one. What is the reason? We have to play with multiple features, means more than one dimension. That's why two brackets. Here Y. After that X and Y established, we have to model selection for the train test split. Again under the train test split, pass your X, pass your Y, and your test size is 0.5 here. You can use 0.2 also, and any random state. Random state is up to your choice. Then fit the model according to my training data set. What is training data set? X train and Y train. After the fitting, just predict the things. Predict the things based on the X test. ठीक है? So इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. Modification is, one second, sunny, high and strong. क्या हुआ? Now see this line. Among of you one is asked me that, अभी शायद वो छोड़ के भी चले गए, चलो मैं आंसर देती हूँ इसका. उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्स टेस्ट हम पास करते हैं, देन ओके सम रिजल्ट इज हैपनिंग, बट व्हाट इफ आई वांट टू प्रेडिक्ट सम मैनुअल पैरामीटर्स which is not inside my data set, so I am feeding some random values 2 0 0. So 2 means sunny, 0 means high, and again 0 means strong. Means if your outlook is sunny, your humidity is high, and what is your third parameter? Windy, and windy or strong.
then what is the chances that the person is going for golf or not? So you can see the predicted value is 0. 0 is no and 1 for yes. So according to my 200, when there is a sunny condition, humidity is high, wind is strong, then there is a no chance that a person is going for to play golf. Now check the accuracy again. Matrices dot accuracy score 71 I am getting. ठीक है हाँ क्योंकि रैंडम स्टेट सबका सेम है ठीक. Now I'm giving you another assignment to you. There is another file a3.csv. Just upload that. Same way. Instead of a2 just write a3 इसी कोड में. Now in the same code I am changing a2 by a3. This is an example that I was telling you in the beginning of the session, right? That the person is suffering from diabetes based on some conditions, that is blood pressure and the glucose. The good news is this data set is already in labeled and numeric format. So there is no need of pre-processing, right? So just directly jump over the x and y. How that? X equal to your data and under the data double quotes and column name like this. See here x your data variable name, under the two brackets you have to pass first column name that is glucose and the second one is blood pressure. Same thing you have to do for y. Y is data and under the brackets diabetes. Like this way, x equal to data under glucose and blood pressure will your x variable, then y is diabetes. X and y in fix, then model selection, again naive Bayes and Gaussian MB. Then model फिट करिए मॉडल को, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड करिए, प्रिडिक्ट करिए, बताइए रिजल्ट. यू कैन कॉपी के पेस्ट द प्रीवियस कमांड्स, वहीं से पेस्ट करना है, बस एक्स और वाई चेंज हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. हाँ वाई प्रिडिक्शन आया ऐसे, ऐसे आ गया वाई प्रिडिक्शन. सो वाई प्रिडिक्शन 1 मीन्स यू आर prone to diabetes according to your features. ठीक है, so it is saying that if your glucose level is here x test, if your glucose level is 50 and your blood pressure is 77,
glucose is 50 and blood pressure is 77, then you have a chance of getting the diabetes. Now tell me the accuracy. One simple assignment, one simple. I have one data, that is if my glucose is 45, my blood pressure is 50. Now check and tell me that I am having diabetes or not. Tell me. My glucose is 45 and my blood pressure is 50. इसमें नहीं मिलेगा आपको, मैनुअली टेस्ट करना पड़ेगा. Who will tell me the answer? In which year you are? Final year. So what is your project topic? Good. One. ठीक है. Yes, by using the machine learning you can do the signal analysis, but classification problem नहीं आएगा, वो regression में आएगा. सिग्नल में आपका continuous डेटा होता है. अच्छा, MIMO. So उसकी तो कोडिंग मैटलैब में ज्यादा अच्छी होती है. पाइथन में इतना स्कोप नहीं है उसका, मैटलैब में अच्छा है. But in fact, MATLAB is also loaded with machine learning and deep learning toolboxes. हाँ 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 हाँ. इधर मैडम लोग, what is the answer? If my glucose is 45. हाँ, good. आपका मैडम क्या हुआ? कैसे करना है? यहाँ पे जैसे है ना, एक्स टेस्ट मैंने ऑलरेडी पास किया है. आपको यहाँ पे मैनुअल पैरामीटर डालना पड़ेगा. ठीक है, मैनुअल पैरामीटर के लिए कैसे डालेंगे? उल्टा काम कर रहा है क्या ये? हाँ, ये यहाँ पे आप ऐसे डायमेंशन में डालो डेटा एंड 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन नहीं इसको डिलीट करें. देखिए डेटा, ठीक है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाँ, देन सिंगल को नहीं, नॉट अ सिंगल कोट्स, न्यूमेरिक डेटा इट इज 45, 50. 45 डायरेक्ट 45. yes, comma 50. now run the code. अरे predicted equal to model dot predict सही है, 45, 50 सही तो जा रहा है. ओ माय गॉड, ये तो आप कैसे इसको चला रहे हो सिस्टम को? इसमें बच्चों ने क्या क्या कर दिया है. none of the 45, 50. मॉडल फिट हो गया है आपका, मॉडल ट्रेन भी हो गया है, देन वाई हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है.
जैसे प्रेडिक्टेड अनदर वेरिएबल एंड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में 45 एंड 50 मैंने डाला है, तो 45 को 50 अगर मैं डालूंगी तो प्रेडिक्टेड वैल्यू मेरी 1 आ रही है, मींस वी हैव अ चांस ऑफ डायबिटीज, ये बोल रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन में हम ये करते हैं। अभी यहाँ पे क्या एरर आ रही है वो बड़ी दिक्कत। कंट्रोल सी, वहाँ पे डेटा नहीं लिखा था, तो यहाँ पे डेटा लिखा है। अच्छा यस, डेटा नहीं जाएगा इधर, डायरेक्ट हम डाल रहे हैं ना। सही। क्या हुआ इधर, इतनी एरर्स, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे फर्स्ट इसमें जब चेंज करने के पहले कॉपी पेस्ट जो किया था उसके बाद एरर शो कर रहा है, वो एरर नहीं समझ में आ रही एरर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं वो पहले पार्ट में देखा था। है, एक्स में दिखा रहा है इधर, एलबी में। नहीं अगर ये ग्लूकोज और ब्लड से ये दो इनपुट है हमारे पास, और हम लोग वहाँ पे कौन ह्यूमिडिटी एलबी, जैसे अपन यहाँ पे 48 दिया तो 0 में एलबी एंड देन एलबी, सारे नाम करेक्ट है ना? आउटलुक एलबी, 1 आ गया। ये देखिए, ये नेम आपके मैच करने चाहिए, आउटलुक अंडरस्कोर एलबी ये ठीक है, ये मैच नहीं हो रहा है। फिर ये दो दो कैसे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा, ये ऊपर से डेटा जो इनपुट भी चांसेस है 80 क्या इतने सारे कैसे आ रहे हैं आपके? एक मिनट, आउटलुक किया, आउटलुक आपने यहाँ पे कर लिया है ना, तो आपको वापस से करने की जरूरत नहीं है। सिंगल किया बाद में कंबाइन किया। एक बार कर लिया, देन ह्यूमिडिटी 130 वो है एंड विंडी लिंक, सो ये हुआ रन, ये हुआ ह्यूमिडिटी, 130 भी चांसेस तभी ह्यूमी एलबी कहाँ से आ रहा है? चांसेस है 1 हां नहीं 1 और 0 तो ऐड हो गया है इसमें। हां बराबर उसके बाद ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वो लेगा ही डेटा। आपको बोल 40 60 नहीं अभी प्रेडिक्शन जैसा मॉडल को डेटा दिया वैसा करना डेटाबेस और फाइंड डेटा डिफरेंट मॉडल डेटा सेट तो ऑलरेडी लाइब्रेरी से हां वेरी फाइन उसमें कौन से मॉडल लगाए एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे you can find the accuracy also जिससे आगे आगे accuracy 94% इस मॉडल की accuracy 94% अभी आया ना? अभी ये जो नेम है ह्यूमिडिटी आउटलुक, ह्यूमिडिटी एलबी, एनविंडी एलबी, अभी ये सही जा रहा है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू डाटा 1 कर जो भी डेटा दिया 500 डेटा हाँ, नहीं तो फिर वो वही उठा लेगा वापस। अपना ये डेटा सेट और कहीं पे डेटा आया है? ग्लूकोज की वैल्यू उसे आ रही है विंडी एलबी नॉट इन इंडेक्स। अच्छा, विंडी नहीं है, विंड है। वेलकम इन दिस कॉलेज। आई थिंक कल सर आए थे ना, सर ने हाँ मुझे हाँ बताया हाँ था हाँ। आप आने वाले हैं। ओके, तो मुझे एक चीज पूछना है कि जैसे आप लोग डेटा सेट्स दे रहे हैं लाइब्रेरी में, तो वैसे ही कुछ लोग जो वाटर पे रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वाटर का डेटा इज अवेलेबल है, तो कहाँ से, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इट? यूसीएल लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की,
Okay. ठीक है. So this is a collection of all the data set you can verify It's over there. we have to download. Open data Open set है वो. source. हाँ. Okay. UCL is something how the data set library from outside India. So the first iris data set I have uploaded from that UCL. एक बार UCL का लिंक दिखाइए. Excuse me. UCL वाला जो लिंक था स्टार्टिंग में स्पीशीज वाला. मुझे एक चीज पूछना हाँ. था कि इसमें काफी कुछ चल रहा है. So they can predict in the similar way. We can predict the quality. तो उसके लिए सारे सेट जैसे अभी आपने ग्लूकोज और बीपी का रखा है वैसे ही वहाँ पे सारे पैरामीटर्स के बेस पे we can predict it. Yes, yes. So AI based we can do it. Similarly soil का जो characteristics रहता है वजह से we know three types of soil. क्लासिफिकेशन. तो उसके भी क्वालिटी पे पैरामीटर पे भी डेटा सेट्स अवेलेबल है. हाँ उसके में भी है वो IoT के गिटहब एक लिंक है गिटहब. वहाँ पे आप IoT डेटा सेट ऐसे सर्च करिएगा ओपन डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ. हाँ हाँ ये है ना. ये देखिए मैम ये आर्काइव है UCI का. अब यहाँ पे मशीन लर्निंग डेटा बेसिस है. इतना आप डिलीट करिए आइरिस डेटा आइरिस तक. और या एंटर. हाँ हट गया है वहाँ से. यहाँ बहुत सारे डेटा सेट हैं. हाँ कुछ न्यू डेटा सेट भी वो लोग सेंस करते हैं जैसे IoT का है ना. किसी भी टॉपिक में मिलेगा. वो लोग डिवाइस से सेंस करते हैं और डेटा यहाँ पे अपलोड कर देता है. मे बी योर डेटा इज नॉट लेबल्ड. जैसे कि आइरिस डेटा देखा तो लेबल्ड नहीं था. हमने उसे लेबल प्री प्रोसेसिंग इसमें लग सकती है. हार्ट डिसीज का डेटा है. बहुत सारा डेटा है. See more new data sets. आप बहुत सालों से अभी NIT में. नहीं नहीं PhD कहाँ से? NIT इलाहाबाद. MSc मौलाना. नहीं नहीं NIT इलाहाबाद. इलाहाबाद. मोतीलाल नेहरू. हाँ हाँ हाँ. उनकी 664 एंट्रीज आ गए हैं. Okay, thank you so much. ठीक है. My own. नहीं ओला से आई हूँ. Where do you stay? अभी तो हाँ अभी मैं घर ही जाऊंगी. हाँ. इलाहाबाद से. नहीं मैं एक्चुअली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ पर मैं 6 साल से यहीं पे रह रही हूँ ना. हाँ PhD मेरा NIT इलाहाबाद से था. देन उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट से थापर यूनिवर्सिटी में जॉब लगा पंजाब. हाँ 1 साल मैंने वहाँ जॉब किया. फिर 4 साल मैंने IIIT नागपुर में जॉब किया है और ये मेरा 6 year is going on in VNIT because IIIT is IIIT, VNIT is VNIT. VNIT का तो आपको पता ही है तो मुझे उसकी एप्रिशिएशन करने की जरूरत नहीं. Actually ma'am there are two types of IIIT, PPP mode and central mode. Central government ma'am. IIIT Nagpur is not central government, it is under PPP mode. That's all right. That's that. Yes. Similarly, Hyderabad is also not. Yes, 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 Got yes. it. Now got it. I thought Yes. we both are the same thing. They are in triple P mode. I know, because I was in Hyderabad and then. Okay. Oh yeah. Yes, yes. I would like to thank ma'am for such an engaging session. We will have more of it. Thank you. Acha, हाँ. Okay, okay. Any doubts you have? No? So drive link is with you. You can play with the data sets and the code also, right?